children, today we are going to start exercise 6.11. Solve these word problems. And the first one is, how many pieces of 1/4 meter length can Shreya cut from a tape of length 6 whole 1/2 meter? श्रेया के पास कुछ टेप है जिसकी लेंथ 6 whole 1/2 मीटर है और उसमें से वो कुछ पीसेस कट करना चाहती है जिसकी लेंथ 1/4 मीटर है. तो वो टोटल कितने पीसेस बना पाएगी? Then which operation you will do? You will divide to get the number of pieces. So the length of a tape is 6 whole 1/2 meter. Convert it into improper fraction, 13/2 meter. Length of a piece which is cut, 1/4 meter. Now number of pieces can be cut, 13/2 divided by 1/4. Now reciprocate the numbers, 13/2 into 4/1. Then cancel it by 2. 2 1 the 2, 2 2 the 4. So which numbers are left? 13 and 2 as numerator and 1 as denominator. So we will multiply 13 and 2 and the answer is 26 pieces. So therefore she can cut 26 pieces. Now the second part is, the product of two numbers is 2 whole 2/3. One of the number is 8. Find the other number. When we multiply two numbers we get product. प्रोडक्ट तो हमेशा बड़ा होता है और दूसरा नंबर भी हमको गिवन है 8. तो अदर नंबर जो मिसिंग नंबर है कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हेन वी डिवाइड दीज टू नंबर्स. नाउ लेट्स सी. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 2 whole 2/3. कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वन नंबर इज गिवन एज 8. द अदर नंबर इज 8/3 divided by 8. When you solve it, you get 1/3. So the other number is 1/3. Now third is, Vijay buys 4 whole 1/2 kg of cauliflowers. If each cauliflower weighs 1/4 kg each, how many cauliflowers does she buy? So what is the question? विजय ने बहुत सारी कॉलीफ्लावर्स खरीदी और हर एक छोटी छोटी कॉलीफ्लावर का वेट है 1/4 kg. तो उसने कितनी कॉलीफ्लावर्स खरीदी? तो नंबर ऑफ कॉलीफ्लावर्स तो ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे पीसेस. लेट्स सी. नाउ कॉलीफ्लावर्स बॉट 4 whole 1/2 kg. कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/2 kg. वेट ऑफ ईच कॉलीफ्लावर 1/4 kg. Number of cauliflowers bought, 9/2 divided by 1/4. Now reciprocate the numbers. Cancel it by 2. 2 1 the 2, 2 2 the 4. And what numbers are remaining? 9 and 2. 9 to the 18. Therefore Vijay buys 18 cauliflowers. Fourth part is, Sumit travels 6 whole 2/3 kilometer in 1 whole 1/3 hours. How much distance would he cover in 1 hour? कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था 1 whole 1/3 आवर में. तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा? जब ज़्यादा का गिवन हो, कम का फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड. सो लेट्स सी. डिस्टेंस कवर्ड इन 4/3 hours is 20/3 kilometers. Distance covered in 1 hour, 20/3 divided by 4/3. Now reciprocate the numbers. 20/3 into 3/4 because we have reciprocated 4/3. So cancel 3 and 3. What we have got? So we left with 20/1 into 1/4. Again 4 and 20 can be cancelled. 4 1 the 4 and 4 5 the 20. So the number left is 5 only.
The answer is 5 kilometers. Therefore, Sumit covers 5 kilometers in 1 hour. Part is 8 whole 1/2 bottles contain 42 whole 2/3 liters of water. What is the capacity of each bottle? अब हमारे पास वाटर कितना था 42 होल 2/3 लीटर्स और बॉटल्स कितनी थी 8 होल 1/2. सो हर बॉटल में ईच बॉटल में कितना वाटर आया दैट इज टू बी फाइंड आउट. So water in 17/2 bottles equal to 128/3 liters. Water in one bottle 128/3 liters divided by 17/2. Reciprocate the numbers. Now we see 28 and 17 cannot be cut. 2 and 3 cannot be cut. 2 and 17 cannot be cut. 128/3 cannot be cut. So when no numbers can be cut, then we simply multiply numerator and numerator, denominator and denominator. So while multiplying we have got 256/51. This is an improper fraction. We will convert it into mixed fraction. And the answer is 5 whole 1/51 liters. Therefore the capacity of each bottle is 5 whole 1/51 liters. Now sixth part is Shilpa has bought 3 kg of dry fruits. She wants to pack them in gift packs of 1/4 kg each. How many gift packs will she be able to make? अब टोटल ड्राई फ्रूट्स वो 3 kg लेकर आई थी. छोटे छोटे गिफ्ट पैक उसको पैक करने थे 1/4 kg each. तो हाउ मैनी गिफ्ट पैक्स शी विल बी एबल टू मेक, कितने वो बना पाएगी. लेट्स सी. Total dry fruits bought 3 kg. Weight of each pack 1/4 kg. So number of packets can be made 3 divided by 1/4. Reciprocate the number. 3 into 4/1. So multiply 3 and 4. You get 12 packets. Therefore Shilpa will be able to pack 12 packets. 1/4 liter of liquid has to be poured equally in 8 bottles. How much liquid will each bottle hold? Total liquid है 1/4 liters और उसको डालना है हमको 8 bottles में. तो हर बॉटल में कितना लिक्विड आएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स सी. टोटल लिक्विड 1/4 liter poured equally into bottles. कितनी बॉटल्स हैं 8. लिक्विड ईच बॉटल विल होल्ड, एक बॉटल में कितना आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 8. रेसिप्रोकेट द नंबर. 8 will become 1/8. So in numerator we see only 1, in denominator 4 and 8. So multiply these two and the answer is 1/32 liter. Therefore each bottle will hold 1/32 liter of liquid. Question 8 is a fast moving train is 9/10 km away from a tunnel. If it covers 1 km in each second, how many seconds will it take to enter the tunnel? एक ट्रेन है जो कि सिर्फ 9/10 किलोमीटर दूर है टनल में जाने से. और what is the speed of it? 1 kilometer in each second. 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में कवर करती है. Then how many seconds will it take to enter the tunnel? टनल में जाने में उसको कितने सेकेंड्स लगेंगे? So let's do the solution. Distance to be covered is 9/10 kilometer. Distance covered in 1 second 1/10 kilometer. Number of seconds it will take. So 9/10 divided by 1/10. Reciprocate the numbers. Cancel 10 and 10. So the answer is 9 seconds. Therefore a train will take 9 seconds to enter the tunnel. Hope all questions are clear to you now. That's all for today. Bye bye.